Ishu Prabhu Hare Krishna, Naveen Ji. Hare Krishna, Prabhu. Let's start. Please start. Om Agyanam Timirandasya Jnana Shalakya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sayagandagunathavitam Tam Sajivam Sadhavetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pradan Sayagan Lalita Shiv Shakavitam Cha नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। स्टार्ट विद यस स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा न्यू स्टार्ट करना है क्या प्रभु जी? ये चैप्टर सेटिस्फाइड है? हाँ जी हाँ जी बिकॉज आवर सेंसेस आर डिफेक्टिव। ओके। Satisfied animals. Because our senses are defective, the technological enlargements of our senses must also be defective, of course. Kanak. The microscopes with which we detect things must also be defective. Ishu Prabhu. He is on listening mode. Okay. Material existence means defective existence. If you construct something with defective knowledge and imperfect senses, whatever you construct must be defective. Swati Mataji. Even if scientists devised a perfect microscope, they would still have to look through it with defective eyes. Yes, that is right. Therefore, we conclude that whatever the scientist may say is defective. But they seem quite satisfied. The ass is also satisfied. The ass is satisfied to carry the load of the washerman. Everyone is satisfied, even the worm in the stool. That is nature's law. It is said that even the pauper is proud of his penny. Yes, in some parts of India, one may sometimes see a dog starving to death. But as soon as it gets a female dog, it is satisfied with having sex. Is that satisfaction? The dog is starving, but still it is satisfied with sex. The 15th morning walk, December 7, 1973, recording on December 7, 1973, on the shores of Pacific Ocean near Los Angeles. Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Singh, Dr. W.H. Wolf Rotke, and another student. Getting the eyes to see God. For the last 150 years, one of the major problems of Western theologians has been the relationship between reason and faith. They have been seeking to understand faith through reason, but they have been unable to find the relationship between the reasoning abilities and faith. Some of them have faith in God, but their reason tells them there is no God. For instance, they would say that when we offer prasada to Lord, it is only faith to think that He accepts it, because we cannot see Him. They cannot see him, but I can see him. I see God, and therefore I offer prasad to him. Because they cannot see him, they must come to me so I can open their eyes. They are blind, suffering from cataracts, so I shall operate, and they will see. That is our program, student. Scientists say that there is common ground of objectivity is what they can perceive with their senses. Yes, they can perceive things with their senses, but very imperfectly. They perceive the sand with their senses, but they see who has made the sand. He is the sand, and he is the sea. They can be seen by direct perception, but how can one directly perceive the origin of the sand and the sea?
The scientists say that if the sand and the sea were made by God, we would be able to see him, just as we can see the land and the sea themselves. Yes, they can see God, but they must get the eyes to see him. They are blind, therefore they must first come to me for treatment. The Shastras say that one must go to a guru to be treated so that one can understand God. How can they see God with blind eyes? Hare Krishna. Mataji, am I audible? आपकी आवाज तो आ रही। हाँ हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण आपकी आवाज जी। किसकी किसकी टर्न है अभी? आपकी है। आपकी है उदित प्रभु। ओके, मेरा ना बीच में नेटवर्क चला गया था। विशीला प्रभुपाद वाला पढ़ना है, स्टूडेंट। स्टूडेंट पढ़ना है। स्टूडेंट वाला। Okay. But seeing God is super mundane. Scientists only consider mundane vision. I think yes, Naveen Prabhuji is also there. Prabhuji, Yes, Prabhuji, I can start, Prabhuji. from, Can you yes, please help me where we are, Prabhuji? from Srila Prabhupada, everything is super mundane. Everything is super mundane. For instance, you may think there is nothing in the clear sky. That is vacant. But your eyes are deficient. In the sky, there are innumerable planets you cannot see because your eyes are limited. Therefore, because it is not in your power to perceive, you have to accept my word. Yes, there are millions of stars out there. Is space vacant because you cannot see the stars? No, only the deficiency of your senses leads you to think so. स्वाति माताजी। स्वाति माता मुझे जी। समझ नहीं एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, शायद थोड़ा मिस हो गया ये मेरा। बोल रहे हैं कि सुप्रीम इज मुंडे। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो आईज है वो इतने ज्यादा सेंसेस इम्परफेक्ट है ना, इस वजह से हम मिलियंस ऑफ स्टार्स है लेकिन वो देख नहीं पाते स्काई में। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इम्परफेक्ट हैं, तो तभी हमें गुरु की आईज से देखना पड़ेगा बिकॉज ही हैज परफेक्ट विजन। ओके। तो हमारी डेफिशिएंसी ऑफ सेंसेस से हमें भगवान नहीं दिखता है। ओके। The scientists will admit their ignorance of some things, but they say they cannot accept what they cannot see. If they are ignorant, they have to accept knowledge from someone who knows the truth. But they say, what if what we are told is wrong? Yes, Naveen Prabhuji. Then that is their misfortune because their imperfect senses cannot perceive God. They have to hear it from an authority. That is the process. If they don't approach the authority, if they approach a cheater, that is their misfortune. But the process is that wherever your senses cannot act, you must approach an authority to learn the facts. So The frustration, Yes. the frustration of the atheists. The difficulty is that in a group of atheists, you cannot prove the existence of God. the atheists are rascal. Let us teach the others, those who are reasonable. Everything has been made by someone. The sand has been made by someone, the water has been made by someone, and the sky has been made by someone. Krishna consciousness means learning who that someone is. The scientist will say, present that someone to me so I can see him. It's me, Prabhuji. Yes, Prabhuji. And I answer them, I am presenting that someone to you, but you have to take the training as well. You have to qualify your eyes to see that someone. If you are blind, but you do not want to go to the physician, how will you be cured of your blindness and see? You have to be treated. That is the injunction. That step requires faith. Yes, but not blind faith, practical faith. If you want to learn anything, you must go to an expert. That is not blind faith, it is practical faith. You cannot learn anything by yourself. A point quickly, Yes. regarding the faith. So I was listening in one lecture today. So जैसे हम लोग स्कूल के टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, right? Even though there may be so many different theories, right? But we still accept them क्योंकि हमें नंबर पास होना है, right? So there has to be Yes. some degree of faith. So
ये एक आर्गुमेंट हो सकता है जब कोई अगर बात करता है फेथ की, भाई आप पास होने के लिए भी कुछ भी मान लेते हो ना, वेदर इट इज, यू डोंट गो एंड सी कि जो हिस्ट्री में क्या हुआ था, राइट? नोबडी गोज बैक इन टाइम एंड वेरीफाई, एंड इवन देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम्स एंड सो मेनी एक्सियम्स एंड थ्योरीज जो हम मान लेते हैं, और जो साइंस में ओवर द टाइम other scientist community on other side also questioning them. Yeah, just wanted to make this good point here. Go ahead, Mataji. Haribol, whose turn was it? स्वाति माता जी। मुझे पढ़ना है प्रभु जी। कनक माता जी पढ़ रहे थे ना, मैं करूं क्या स्टार्ट? मैंने ये वाला पढ़ा था, तो अब आपको पढ़ना है उधर। अच्छा, Srila Prabhupada, if somebody is actually sincere, will he always meet a bona fide guru? Yes, Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Beej. Krishna is within you, and as soon as he sees that you are sincere, he will send you in the right person. He will send you to the right person. And Which if is you very are true. not, No, continue करिए, मैं बस ये बोल रहा था, it is very true statement. Once we are sincere, you will find the right person. yeah, true. And if you are not completely sincere, you will get a cheater for a teacher. Yes, if you want to be cheated, Krishna will send you a cheater. Krishna is super intelligent. If you are a cheater, he will cheat you perfectly. But if you're actually sincere, then he will give you the right guidance. In Bhagavad Gita 15.15, Krishna says, Sarvasya chahem hardi sanevisto mata smritir jana apoam cha. I'm seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Krishna speaks of both remembrance and forgetfulness. If you're a cheater, Krishna will give you the intelligence to forget him forever. But the atheists are in control. They have the dominance. One kick of Maya, and all their dominance is finished in 1 second. That is the nature of Maya. The atheists are under control, but due to Maya or illusion, they think they are free. Moghasha mogha karmano mogha jnana visheshasaha rakshashim ashurim chaiva prakrti mohinim sritaha. Those who are bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded conditions, Sorry, Prabhuji. 1 minute. no problem, Mataji. Because, in that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Bhagavad Gita 9.12. Because they are bewildered, all their hopes are frustrated. That is stated here in Bhagavad Gita, and that is actually happening. So many of their big plans, like the Moon Project, are frustrated, but they still claim that they can dominate nature. Doctors, I think somebody else needs to read it. Lok Prabhu is also there. Prabhuji. They do not want to come to their senses. Therefore, they are rascals. Scientists bravely going to hell. A sensible man will take a good lesson, but a rascal never take a good lesson. There is a story of a great poet named Kalidas, who was a great rascal also. Once Kalidas was sitting on the branch of a tree and simultaneously cutting it. A gentleman asked him, "Why are you cutting this tree limb? You will fall down." Kalidas replied, "No, no, I will not fall down." So he kept cutting the limb and he fell down. The conclusion is that he was a rascal because he would not take good advice. By their so-called scientific advancements, scientists are going to hell, but they do not listen when they are told. Therefore, they are rascals. Rascals repeatedly make a plan, see it frustrated, and again make another plan. This plan is also frustrated, so they make another plan. Yet when we try to explain to them that all their materialistic plans will be unsuccessful and useless, they refuse to listen. That is rascaldom. The rascals repeatedly chew the chewed.
At home, in the street, at the nightclub, at the theater, wherever he is, sex in its different varieties is his only pleasure. Srila Prabhupada, one could say that is bravery. Naveen Prabhuji. Yes, Naveen. Oh, मेरा turn है क्या? मेरे को पढ़ना है? Yes, Prabhuji. अच्छा, Okay. yes, you can. Sorry. Okay, go ahead, Prabhuji. Yes, you can say that, but that bravery is their rascaldom. They are bravely going to hell. That's all. Once one man was chasing another man, and the man who was chasing asked, why are you fleeing? Are you afraid of me? The other man replied, I'm not afraid of you. Why should I not run? Why should I stop? In the same way, the gross materialistic is bravely going to hell. Why should I stop with my sinful activities? He says, I will bravely face any reaction. एक तरह से मतलब जब भागने का एग्जांपल है तो हम अपने लाइफ में देख सकते हैं, स्पेशली मतलब मैं तो काफी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जैसे अब आईटी फील्ड में है तो हम देखते हैं काफी लोग भाग ही रहे हैं। उनको बोलो क्यों भाग रहे हो तो ये कहेगा तो रुक रहे क्यों है, चलते हो, यही जीवन है भाई। ओके, Naveen Prabhu. Yes, crazy. Sorry, Dr. Singh, they are crazy. Yes, crazy. The Vedas say that once a man becomes crazy or haunted by ghosts, he speaks all kinds of nonsense. Similarly, anyone under the influence of material energy is crazy. Therefore, he talks only nonsense. That's all. The scientists are not expert in science. They are expert in bluffing others and juggling words. जगलिंग वर्ड्स यही चल रहा है। Uday. नहीं वर्ड नहीं कहते हैं, बात ही नहीं कर सकते हम। कलयुग के लिए बेस्ट क्वालिटी अगर आप में है तो आप मिलियनर बन सकते हैं. This is the only quality you need in this Kaliyuga. हाँ प्रभु जी? You just juggle words and then you're like you can become millionaire also. People will think you're very learned Brahmin. You're like Yes, telling what? That is the only quality required. Expert Okay. in juggling words. हाँ, seriously. आप देख लो जितने भी लोग अच्छे से जगल वर्ड कर रहे हैं वो सब आज materially they are at good position, rich, wealthy. Seriously. People are worshipping them. रोल मॉडल बन जाते हैं। अब देखो ना जैसे बॉलीवुड के एक्टर है, कैसे जगल अगर बढ़िया तरीके से बोल देते हैं लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। हाँ. ये बोलते हैं कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं सेफ पेट्स से प्रोटेक्ट एनिमल्स, और वहां पर रेस्टोरेंट में जाके वहां पर चिकन लेके आओ, चिकन ऑर्डर करेंगे, बीफ लेके आओ. Don't fire Anyway. crackers at Diwali. Yes. Don't waste water. Anyways, this is Kaliyuga and juggling word. If seriously, अगर कोई भी इसमें बहुत expert है, that person can be very powerful and successful and materially in Kaliyuga. Fortunately, devotion में ऐसे भक्त आ जाए तो नहीं आते, अगर आ जाए तो ये भक्त तो बना सकते हो, है ना? हाँ बिल्कुल, ये लोग यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. है ना? Yes, yes. Okay, let's move on. Mystic television. Kanak. They now have things that they did not have before, like telephones, televisions, airplanes, missiles, and many other new discoveries. But there are better telephones that they do not know about. In Bhagavad Gita, Sanjay demonstrated this when he was sitting with his master Dhritarashtra and relating all the affairs that were taking place far away on the battlefield of Kurukshetra. Sanjay's vision was actually greater than the telephone. It was mystic television. It was television within the heart, for he was sitting in a room far from the battlefield and still seeing everything that was occurring there. In Bhagavad Gita, Dhritarashtra inquired of Sanjay, how are my sons and nephews? What are they doing? Sanjay described how Duryodhana was going to Dronacharya, what Dronacharya was speaking, how Duryodhana was replying, and so on. Even though these activities were too far away to be seen by ordinary eyes, Sanjay could see and describe them through his mystic power. That is real science. मेरा turn. प्रभु जी, इससे मतलब प्रभुपाद प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? एक तो ये है कि पहले भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, है ना? मतलब पहले तो फार बेटर थी उस बात को।
फार बेटर थी। तो बट अभी अगर अभी हम किसी को ये तर्क देंगे तो दे विल से कि हाँ वी आर ट्राइंग, वी आर इम्प्रूविंग, और वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट दिखा भी सकते हैं कि भाई कि हमने कितना इम्प्रूव कर दिया चीजों को ना। बट तो हमारा इससे मतलब पॉइंट वही है कि टाइम कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट क्यों करने का। अगर साइंस का भी रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप वैदिक टेक्स्ट रेफर करो, और वैदिक टेक्स्ट को रेफर करके वहां से जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आप साइंस में एडवांसमेंट करो। पॉइंट ये मतलब है। इट इज गिवन इन वैदिक टेक्स्ट की हाउ टू मेक सच टेक्नोलॉजी और समथिंग। देखा जाए तो मुसलमानों के अटैक के बाद तो 5% ही बचे हैं शास्त्र, बट पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि उनको जो भी एडवांसमेंट था वो इतना ज्यादा था कि वो अभी तो कम्पीट नहीं कर सकते, और उनका एडवांसमेंट तुम्हारी साइंस बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं था, तुम तो अब लेके आए हो, है ना, उनको पहले से था। पॉइंट बस वही बताना मतलब चाह रहे हैं कि एडवांसमेंट नहीं कर रहा है साइंस, इससे ज्यादा एडवांसमेंट पहले हो रखा था नॉर्मल आदमी के लिए। मतलब मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी नीड ही नहीं है जो भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो आई थॉट कि अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नहीं है, बट फिर अगर ये है कि हो हम्म, गया है तो ठीक है, बैड बार्गेन वाली बात है, फिर हम उसे कृष्णा की सर्विस में यूज करेंगे। यस प्रभु यस। वैसा बड़ा मुश्किल हो जाता है अथीस्ट को ना, मतलब ये सब कन्विंस नहीं करना बताना होगा, अथीस्ट को। भगवान की कृपा ही चाहिए, कौन से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से हम कन्विंस करके किसी को ले आएंगे, सब भगवान की कृपा से आते हैं। हमें लगता है कि हम हम्म, लाए हैं, वो भगवान ही उसे मोटिवेट किए हैं, किसी भक्त ने कुछ प्रसाद खिलाया, कुछ हुआ है उसका, तभी आया वो। हमारे में क्या हम्म। ताकत है। नहीं तो वो तो सीधा ही बोल देते हैं कि दिखा दो दिखा हाँ, दो, और फिर वो मतलब फायदा नहीं है हम्म, कंक्लूजन निकले, क्योंकि फेथ ही चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वो वही आया ना, इससे पहले भी जो हम पढ़े थे, इससे पहले जब हम पढ़े थे तो वो स्टूडेंट बोले नहीं कि दैट रिक्वायर्स सम फेथ, प्रभात बोले यस दैट रिक्वायर्स फेथ, करेक्ट ना। जब जब उसने बोला कि जब यस उसने बोला यस। कि जब सॉरी प्रभात जब बोले कि बट दी साइंटिस्ट विल से नो शो अस गॉड, एंड वी आर सेइंग वी कैन शो गॉड, बट यू कम एंड फर्स्ट गेट द ट्रेनिंग टू गेट द दैट दोस आईज टू सी गॉड, है ना। टू तो सी गॉड। फिर वो बोले स्टूडेंट ओके दैट रिक्वायर्स सम फेथ, तो भाई यस दैट रिक्वायर्स सम फेथ। एक और बात है प्रभु जी, वैसे बहुत कॉमन लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, और सुनते भी हैं कई बार। जैसे अब तो खैर फिर भी टेक्नोलॉजी हो गई है, मतलब लाइक थ्रू इंटरनेट एंड ऑल और टीवी, बट आज से पहले की अगर बात करें, जो सीनियर पोजीशंस पे अगर कोई है, सीईओ है, कोई प्रेसिडेंट है, तो ऐसे कौन मिल पाता था? अनलेस यू हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल और समथिंग यू आर, देन इफ यू आर क्वालिफाइड देन get to see or meet. Otherwise you are just fighting or protecting the nation or fighting for that person. अगर किंग की भी बात करें तो उसके जो पहले जो राजाओं के सिपाही केवल राजा के नाम के लिए अपने अपने किंगडम के लिए बचाने के लिए लड़ रहे थे, दे हैव नॉट प्रॉब्ली सीन, और दे मे हैव सीन, बट यू नो दूर से, लेकिन कहीं मिले भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम भगवान को देखने की, तो कोई क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? अगर कोई हमसे पूछ रहा है भाई हमें देखना है, बट ओके हैप्पी टू यू नो, बट व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? और अगर आप बोले आपने देखे भाई, आई एम आल्सो ट्राइंग टू बिकम क्वालिफाइड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। तो ये आर्गुमेंट तो मुझे भी नहीं आता कि वो बोले कि हमें भगवान दिखा दो, भगवान दिखा दो। भाई क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मतलब हाँ, इसमें प्रभुपाद ये भी तो बताते हैं कि आप ऐसा काम करें कि आप भगवान को ना देखें, भगवान आपको आगे देखे खुद। तो देन शायद उस दिन हम समझ भी पाएंगे कि अदरवाइज क्या है कि अगर भगवान आ भी गए सामने तो बिल्कुल क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल। हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो जौहरी तो बनना पड़ेगा पहले। वो कोई तो मैं ऐसी बात करते हैं हम लोग, आई थिंक बोल रहे थे कि आज अभी अभी कृष्णा या राम भगवान या कोई आपके सामने रियल में आ जाए और वो बोले हाँ मैं हूँ राम या मैं कृष्णा, तब भी हम विश्वास नहीं करते। वो कहे कि चलो वापस चलो बैकुंठ चलो, हाँ, मैं आगे हाँ, बैड बेटर ले आना जरा आते आते। अभी हम क्वालिफाइड है नहीं, हम बोले कि कोई बहरूपी आ गया और वो थोड़ा सा अगर मिस्टेक, थोड़ा पावर भी दिखाएगा तो कहेंगे अरे मिस्टेक होगा कोई। तो अच्छा, अब प्रभुपाद इस लेवल पे भी लिया कि अगर कोई मिस्टेक परफॉर्म करेगा तो ऐसा लगेगा तो ढोंगी है। ये तो अच्छा है कि प्रभुपाद मतलब जो इस्कॉन मूवमेंट में आता है तो कुछ टाइम के बाद ही वो, चाहे ठीक है वो भक्ति कैसी भी इसके चल रही है, पर ये तो फिक्स हो जाता है कि नहीं
भक्ति ही करनी है और इस्कॉन में ही करनी है ना। और बाहर भी चला भी गया तो वापस आ जाता है इस्कॉन में से, पता नहीं बाहर से। यस यस यस। ओके ओके, कंटिन्यू प्रभु जी। कितना टाइम बचा है? अभी है ना टाइम तो? 7:26। हाँ प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अभी किसका टर्न है? लास्ट कनक। नवीन प्रभु जी का टर्न है। Some scientists say that we have improved on nature by making things like plastic and medicine. क्या nonsense है? Okay. मेरा टर्न है? नहीं, स्वाति माता जी। नहीं, वो स्वाति माता listening जी mode is में। listening mode. Yeah. Okay. कनक। In Vedic times, people ate on silver and golden plates, but now the scientists have improved things with plastic plates. The plastic has become a great problem because they cannot get rid of it. There is no way to dispose of it. It just continues to pile up. बताओ। Someone, Dhananjay, also joined. Yeah, Dhananjay Prabhu is my friend. Okay. Yeah, Hare Krishna Dhananjay Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Now your turn to read. Yes, Prabhuji. Here is the proof. Here is the proof. Dr. Wolf Rodocke, the materialist would be more sincere if they said, we don't want to be taken out of our dream. We want to continue trying to enjoy our senses with all our machines. But they will not admit that their attempts to enjoy always fail. Always fail. मेरा टर्न है? No. That is their foolishness. Prabhuji, Eventually. किसका था? टॉपिक है। then I think we can stop. Prabhuji. Okay. Should we We'll continue? stop and continue from tomorrow. Yeah, you can Okay. mark it. Just mark it, So- please. So I'll remember कि यहाँ पे ये भी डाल, थोड़ा सा कॉपी करके ना ग्रुप पे डाल दीजिएगा, याद रहेगा कि यहाँ से शुरू करना है। या पीडीएफ में कोई इशू I'm आया। taking the picture, Prabhu ji. I have taken. Oh, I have, okay. I have taken the Okay. screenshot. So I have taken the screenshot. Don't worry. Perfect. Not worry. And you are there. No, Prabhuji. All because of you, Prabhuji. एक छोटा सा सजेशन आई वाज थिंकिंग, Yes, मे बी ma'am. लाइक जैसे आप पहले करते थे रोल असाइन करके, तो 5 मिनट्स करके दो लोगों ने पढ़ लिया, या 5 मिनट से 3 मिनट, जो भी। इसमें थोड़ा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई बार कंफ्यूजन बहुत हो रही है कि क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, ऑर्डर फ्लो में किसका नंबर आने वाला है। थोड़ा सा हम लोग लेट ज्वाइन करते हैं, उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, शायद रोल असाइन करके ठीक रहेगा ना, कोई ज्वाइन भी करा तो सुन पाएगा। मतलब जस्ट सजेशन, आप जैसे समझ लगे। मैं सोचा उसमें रोटेट कर सकते हैं, लाइक नॉट लाइक फॉरएवर, लाइक 2-3 मिनट्स के पर दूसरा दो नेक्स्ट 2 लोगों को कर दिया, या उनमें ही आपस में चेंज कर दिया, सो एवरीबॉडी गेट टू रीड मोर आल्सो, क्योंकि यूजुअली प्रभुपाद के कन्वर्सेशन ही बड़े रहेंगे, यूजुअली तो वो वन लाइनर रहते हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। बाकी जैसा सिख को ठीक लगे। I felt couple of times जब मैं शायद वही आपने जो बोला लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं। एक एड ऑन और था कि इसमें क्या रहता है ना कि जैसे लेट्स सपोज कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यूरियस रहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट टर्न है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रीडिंग ज्यादा बेटर हो जाती है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, अब जैसे क्या होता है, मान के चलिए रोल असाइन कर दिए, तो मैं ना कहीं रिलैक्स हो जाता हूँ माइंड में ना कहीं कि यार अभी तो उनका चल रहा है, तो वो मिस भी हो जाता है कभी कभी ना कि भाई वो चीज, मतलब बस एक यही रहता है मेरे को। मतलब इसमें क्या है कि हाँ नहीं, I like तो रह रहा है। दिस इज अ गुड पॉइंट, इसमें अटेंटिव ज्यादा रहते हैं। हाँ, अटेंटिव ज्यादा रहते हैं, इसमें ये रहेगा कि अरे मेरा टर्न आ जाए। हाँ, ये सही बात है। नहीं, तो फिर इसी को फॉलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलेगा, ठीक है। यू कैन स्टॉप शेयरिंग माता जी और प्रभु जी, whoever is sharing, and we can start with our realizations. Yeah, Ishu Prabhu was also there. I noticed just now. Listening mode. Is on Yes, listening mode? Prabhu. Okay, perfect, no problem.
तो मुझे अच्छा लगा, मुझे तो वही पॉइंट अच्छा लगा उदित को, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो हम लोग कुछ ऐसा खास सब नहीं कर रहा है, और वैदिक सिस्टम में ज्यादा अच्छा एडवांसमेंट था अगर हम एडवांसमेंट की भी बात कर रहे हैं तो that was a nice Yes, point Pradeep. from my side. So thank you. So the and issue was Thank you. listening Thank you more. so much, Yes, Pradeep. Kanak Mataji, you have a point. प्रभु जी वो डिस्कस हो गया था मेरा पॉइंट जब हम बीच में भी डिस्कस कर रहे थे। चलेगा चलेगा. Yes, Nainpur, you wanna share something? नहीं प्रभु, ओनली थिंग इज जब पॉइंट किया जो प्रभुपाद बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने प्लास्टिक और ये सब बना लिया है, बट वैदिक टाइम में तो लोग सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, तो हम अपने आप को बेसिकली हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा Create देते हैं। कर हमारे लेते हैं. जितने भी मटेरियल सॉल्यूशंस हैं, वी आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, प्लास्टिक का हो गया है तो वो थोड़ा स्टडी है, हम उसमें प्लास्टिक की पन्नी में वो फैलेगा नहीं, गीला सामान ले जा सकते, दुनिया भर के सॉल्यूशन, बट देन यू आर क्रिएटिंग an object which cannot be decomposed for next 1000 years or more, who knows. Truly. तो जितने भी हमारे सॉल्यूशन है, मटेरियल सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये चीज मैं वही सोच रहा था कि कैसे लोगों को समझाई जाए, उसकी वजह से थोड़ा सा उनका वहां से एक जो बहुत अट्रैक्शन है टुवर्ड साइंस और टुवर्ड मटेरियल साइंस, वो थोड़ा कम हो कि भाई हाँ साइंस आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट ये भी तो देखिए वो एक करके दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी खड़ी कर रहा है। It's very difficult to convince someone of that. Thank you, Nainpur. Agreed. Okay, तो धनंजय प्रूस आज हम नहीं पूछेंगे क्योंकि लेट इस ग्रुप में ज्यादा उनको पढ़ने को नहीं मिला, बट कल से वो आएंगे तो फिर से उनको एंगेजमेंट ज्यादा रहेगी. So Udit, what is the plan? Will you stop now? Will you stop now? Huh? Yes, Pradeep. Yes, we can. Vancha kalptaru vaishya kripa sindhavya पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. अम्बेडकर भगवान की जय. Thank you for joining, everyone. Hare Krishna. Thank you.